हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन टेस्ट यूटिल्स। तो रिफ्लेक्शन टेस्ट यूटिल्स क्या है? इट्स एन यूटिलिटी क्लास, सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड इट इज़ अंडर org.springframework.test.util पैकेज। सो ये क्या करता है कि इट अलाउज यू टू एक्सेस और मॉडिफाई प्राइवेट फील्ड्स, methods or internal state of classes during testing. तो this test signifies कि ये टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ होता है विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्शन कोड। तो ये उन केसेस में बहुत यूज़फुल है जब आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने हैं और आपको मैनिपुलेट करना है लाइक सम पार्ट ऑफ द कोड दैट आरंट पब्लिकली एक्सेसिबल, फॉर एग्जाम्पल सम प्राइवेट फील्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यूज़ करना है सपोज, सो लेट मी शो इट्स यूजेज। So we import it from this package, this same one. Then after importing we can call it like reflection test utils dot set field, object, name of the field and value. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे class, name of the class, so it has a private field name. So let's say in some service we have my service, like name of the service, this service in test इक्वल टू न्यू माई सर्विस। तो हम कंस्ट्रक्टर से एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड होगा इस क्लास को। देन वी कैन यूज़ रिफ्लेक्शन टेस्ट यूटिल्स डॉट सेट फील्ड मेथड एंड द ऑब्जेक्ट, लाइक द ऑब्जेक्ट वी आर पासिंग हियर, देन नेम ऑफ द field which is name in our case and what we want to set it to. Let's say we will set it to Uber service. Then we can in assertion check whether it is Uber service or automatic service. So here if assertion fails, which means the field value was not set, but since you are using reflection utils it will be set. You can also like get the value of a private field. So let's say an object value, and we are getting using reflection test utils dot get field and pass the object and name of the field. So here you can get, so now we can again check the assertion on it, right? And now the third use case is we can invoke a private method also. Let's say a class calculator had an addition, like add method, which adds the two numbers which are being passed, but it's private, right? So we are initializing the object here and the result will be integer, and we are again typecasting it because it will return an object type, right? So dot invoke method calculate add 2 plus 3, so it will return 5, which is the sum. So reflection test utils, so we can also set the fields in superclass, and how we can do it is, ये कैसे काम करता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या करता है रिफ्लेक्शन टेस्ट यूटिल्स, so it basically traces down the class hierarchy and looks for the field name which we have passed on the object. तो जैसे ही हमको वो फील्ड नेम मिलता है इन द क्लास विच वी आर लुकिंग फॉर, या फिर जैसे हमने फॉर एग्जांपल इस केस में सुपर क्लास पास किया है, तो जैसे ही वो मिलता है तो वो क्या करता है कि हमारे पास एक एक्सेस, हम मतलब देयर इज़ अ फील्ड जिससे हमको पता चलता है कि वो एक्सेसिबल है या नहीं है, तो इट मेक्स इट ट्रू दैट इट बिकम्स एक्सेसिबल, or then we can change the value or get the value or whatever. But it is not recommended to generally use this because इससे क्या होता है कि जो जावा में encapsulation है हमारा, ये उसको break कर देता है, because now the fields are not encapsulated, you know that they are there. So instead of this, use like there's Mockito, like you can use Mockito, and like it's mock bean for auto add, like the places where जहाँ पे भी auto add है कोई भी वेरिएबल, तो हम उसकी जगह आप mock bean यूज़ कर लो। That's it from this video. We'll see you in the next one. Thank you.